नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमरजीत नागी और आज इस नए साल में एक नया पॉडकास्ट लेके आपके सामने फिर हाजिर हैं। नया साल है तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली फॉर अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि इस साल के जो पॉडकास्ट हम करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेयर देने की कोशिश करेंगे उसमें। और हमारी फ्लेयर से मुराद थी कि वी वुड लाइक टू बी मोर बोल्ड, more succinct, more forthright, or straightforward, rather than being more polite and being more circumventing the issue and things like that. So if we sound a bit high and mighty and we sound a bit more aggressive in what we are saying, that is all by design. So we do apologize for that. We do apologize for that. And this is essentially on the basis of the feedback we got from our audience, our friends, that be more straightforward, more sounding authentic. So, and we will try our best. So, the general rubric of our podcast will be speaking simply with no due respect. Now, of course, we do pay due respect, but just as an emphasis on the theme. And under that rubric, we cover various topics. And today's topic is self-promotion and self-bragging. Why people indulge in this? देखिए, पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि don't beat your own drum because that is not effective. Let somebody else beat your drum and your voice will carry farther. लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने में people are unashamedly self-promoting and self-bragging. And sometimes to the extent that it becomes very annoying. So इसलिए सोचा कि आज टॉपिक पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं. Now in certain times, self-bragging, self-promotion, telling your story is required. Say for example, when you're applying for a job interview, or you have to write your resume, for example. So you have to tell your story. You have to brag about yourself. You have to show your positives. But when that same theme or the same mindset overflows into the social situations, तो फिर आपकी सेल्फ ब्रैगिंग जो है वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड, यू बीइंग अनअवेयर, अगर वो होने लग जाती है, so I think that becomes very very annoying. तो आज इसी बारे में बात करेंगे अवनीश जी से. अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके? स्वागत है आपका. Very well, thank you Amar and happy new year. Thank you साहब, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू. देखिए साहब, ये जब भी न्यू ईयर का, हैप्पी हॉलीडेज का हमारा ब्रेक था सारा, तो इसमें हम काफी सोशलाइज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एंड यू ऑब्जर्व पीपल्स ट्रेट्स समटाइम्स and they become so annoying at times, unnecessarily self-promoting, unnecessarily bragging. मैं ये हूँ, मैं वो था, मैं फलाना था, ये था, वो था, मेरे साथ ये है, वो है, और they do it unknowingly, and that's the worrying part of it. So there are place for it, but not everywhere. And not in a very blunt and very uncontrolled way. क्या कहना चाहेंगे आप? Yes, a very good explanation of जो हमारी life की challenges हैं. So we have to be aware of them. एक तो इसके लिए like you mentioned कि जो self promotion है वो there is a place for it, there is a time for it, and there is a way to do it. But I would like to differentiate यहाँ पे थोड़ा सा कि in those situations जो like you gave very good example कि job interview है, या even day to day life maybe at times you have to step in, but that's selling yourself जिसको कह देते हैं. People take that as a justification of their own self bragging, पर I think that is different to self bragging. That is actually self because you have to do it very cautiously, because हमने कई बार इंटरव्यूज में भी देखते हैं, जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो देयर आर पीपल हु आर सेल्फ ब्रैगिंग, और वो अपसेटिंग होती है, और यू जस्ट गेट ऑफ एट दैट टाइम, बट द अदर पीपल आर डूइंग इट वेरी हम्बली विद इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे दैट यू डोंट इवन रियलाइज, एंड दैट इज इन्फ्लुएंसिंग रादर देन सेल्फ ब्रैगिंग. सो वी शुड शार्पन आवर इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, जिसमें है कि you have to engage the other party in a way that they remain interested, because self bragging में तो वो disinterested हो जाते हैं. They become defensive.
They become So defensive. हाँ हाँ हाँ, so through awareness we should be aware कि यार जो मैं कर रहा हूँ तो what is the impact of that on people around me. उसकी भी थोड़ी सी awareness होती है, maintain the humility. And the other point, also you mentioned, our new approach will be more bold, etc. I think we were bold earlier as well, and we were always honest as well as respectful. But अब हम yes थोड़ा सा outwardly उसको announce करके कह रहे हैं, so that people are हाँ aware as yes well. I don't think हम पहले honest नहीं थे या respectful नहीं थे हाँ थे हाँ और अभी भी रहेंगे, of course. And we will हाँ try our best to keep on improving, yes based on our feedback. We should take feedback, and try to correct as much as, and take feedback not only from one person, multiple sources, multiple so sources. so Yes. we can figure out what is right, what is, and what we should be doing, what we should not be doing. और इसमें भी यही है. But again, coming back to our main topic of self bragging, मेरे को लगता है ये एक खालीपन होता है, मानसिकता का खालीपन है, एक अभाव की मानसिकता है जिसको compensate करने के लिए people become, and then once it becomes a habit, where they will come in some situation like you mentioned those examples where people will walk in and just suck the air out of the room. So Yes. other people will feel uncomfortable or disinterested or even defensive. So we should be aware of that. It is very good to you know mention good thing about yourself, but there is a time, there is a place, there is a way to do it. एंड हमें विनम्रता रखनी चाहिए अपनी, और अपने अंदर ये अभाव की जो मानसिकता है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए हमें. हम अ, अपने को अभाव में नहीं समझना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे और एक्सप्लेनेशंस दिए जा सकते हैं. सो awareness is the key. I think if we become aware, then the solutions will come through. Yes, certainly. No, very good, साहब. आपने ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि some people just walk in and suck the air out of the whole Hmm. environment, and other people just don't get a don't get Yes. any space to even breathe, and then they respond aggressively. They Hmm. respond with their own self-bragging fashion and self-promotion fashion, and then it doesn't remain a conversation. It becomes a bitter argument often. ये आप फिजिकल प्रेजेंस में ही नहीं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देख लेंगे कई बार पीपल जस्ट कम इन एंड थ्रो ए समथिंग फ्रॉम द लेफ्ट फील्ड जस्ट टू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द डिस्कशन एंड जस्ट ट्राई टू गेट नोटिस्ड. देखिए साहब, मेरा इसमें ये है कि ये बेसिकली यू राइटली सेड के अंदर से अभाव है, अंदर से थोड़ी इनफीरियरिटी है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, एंड इंटरनल इनसिक्योरिटी लुक्स फॉर नॉइस. जब आप अंदर से इनसिक्योर होते हैं तो आपको शोर शराबा चाहिए होता है. यू वांट टू टॉक लाउडर, यू वांट टू ब्रैग योरसेल्फ. दूसरा, अगर आप इसमें देखेंगे कि एक आदमी को बड़ी नॉर्मल सी टेंडेंसी, नॉर्मल तो नहीं है खैर, कि वेदर आई एम बीइंग ओवरलुक्ड, इज पीपल आर पेइंग इनफ अटेंशन टू मी. क्योंकि जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन अपने हर एक्शन में देख रहे होते हैं, आप जब कमरे में वॉक करेंगे, सो योर आईज विल बी हाउ मेनी पीपल हैव टर्न देयर हेड्स टुवर्ड्स मी, कितनों ने मुझे हेलो कहा, कितनों ने नहीं कहा. तो ये आपको एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि एम आई बीइंग ओवरलुक्ड. और उसके साथ जब ये थोड़ी देर सिमर करती है, देन यू अननोइंगली यू स्टार्ट सेल्फ ब्रैगिंग कि मैं ये था, मैं वो था, मैं फलाना था या थी, जो भी है. तो आई थिंक एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, इसमें द की इज सेल्फ अवेयरनेस एंड जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ एंड इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड एट द टाइम. That look, I'm just walking into it. It's quite likely that people are busy and they may not sort of pay attention to me, which is perfectly fine. During the course of that engagement, time will come when I'll say my piece if I need to say that. I don't have to sort of jump in and start abruptly self-bragging or self-promoting myself, जो कि आमतौर पे मैंने देखा, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा करते हैं. मतलब इंडिया क्या, दूसरे ईस्टर्न कल्चर्स में आप देखेंगे लोगों को लाउडली अपनी बात को रखना, अटेंशन को अपने ऊपर लाना, ये एक बड़ा कॉमन सा ट्रेट है. आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो सोशल इंटरेक्शन की सेंस है, जिसमें कि हाउ टू इंटरेक्ट अमंग इक्वल्स, जिसमें कि दूसरे को भी स्पेस देनी है, उनको शायद ये आदत होती है कि दूसरे को भी स्पेस देनी है. उनको इंटरेक्शन अमंग इक्वल्स की आदत नहीं है. उनको ये है कि एक आदमी बोल रहा है, लीडर बोल रहा है, दूसरे लोग सुन रहे हैं, somebody is above and
other people are below him and listening to him, and he always wants he or she to be in that space where he's the leader of the situation and other people are listening to him or her. तो I think ये जो एक sense है ना, just being able to have a conversation on equal footing with equals, एक बड़ी अच्छी बुक आती है, उसमें था ये बॉर्न टू विन, और उसका जो मेन थीम होता है कि वो यही है कि जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, देयर आर 3 states of mind, आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके. तो ये 2-3 सिचुएशन होती है जिसमें कि या तो आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे, बात ही नहीं करेंगे, which you feel that I'm not okay somehow and other people are okay and they are talking themselves, or the other way around, that I am okay and others are not okay, so I am better than the rest. या लेकिन जो मोस्ट बैलेंस्ड तरीका है वो है I'm okay, you are okay, we are all equals. So learn the ways and means deliberately and with awareness that we are among equals. हर perfect point of view say, intellectually, financially, mentally, growth wise, we are in the same footing. तो जब आप दूसरों को भी वही रिस्पेक्ट देंगे जो आप खुद को देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेल्फ ब्रैगिंग का पार्ट है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है. सो यू ऑलवेज मेक दोज राइट जजमेंट्स कि मुझे यहाँ कुछ कहना है या नहीं कहना है. तो ये मेरा मेन थीम था कि जस्ट बी अवेयर, डोंट वॉक इनटू अ सिचुएशन completely overwhelmed or confused or totally unaware and uncontrolled in your mind कि वॉक कर रहा हूँ और जस्ट हो गए शुरू हो. तो यही था मेरा इसमें एसेंशियली कि जस्ट बी अवेयर एंड इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ. कुछ तो प्रैक्टिस से आता है और कुछ अवेयरनेस से. देयर इज अ ग्रेट थिंग कॉल्ड फोरसाइट एंड हाइंडसाइट. जो करके बाद में देखा इन हाइंडसाइट, ओहो यार ये क्या कर दिया. So with practice you develop that foresight. That means the foresight means you can see it coming. So before entering you have that foresight. So nurture that foresight within yourself, that before you're entering into a group or a conversation, where we could end up, what I have to say, how much I can go, and respect of people around you. So यही था साहब मेरे साथ. Anything you want to add? A few things I would like to point out is that के हम स्वाभिमान में और अभिमान में फर्क है, and we should keep that in our mind. Yes. तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसमें सेल्फ ब्रैगिंग करना is not right. Actually जो influencing skills हैं, self bragging is no into that. So the point is that even self braggers, शायद अपनी जो self promoters का, they are trying to influence, but it is they are doing a right opposite of that in most of the situations. In some situations it might work, I don't know, but we should be aware that it is a poor influencing skill. So if we are trying to influence, be aware that it is not going to work. और फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, चाहे वो कंडीशनिंग से आई है, वी शुड बी एबल टू वर्क ऑन इट. इट विल बी गुड फॉर आवर मेंटल फिजिकल हेल्थ एज वेल. सो दैट इज समथिंग एप्लीकेबल. इट इज पार्ट ऑफ द लाइफ स्किल्स. हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में डिग्री अलग होती है, पर लाइफ स्किल्स की डिग्री पे उसमें उसका कोई इन्फ्लुएंस, कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता. सो वी शुड बी हम्बल एंड इम्प्रूव अपॉन लाइफ स्किल. उसकी डिग्री हमारे को यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलती. सो अपने किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, बिकॉज इवन दैट इज हार्मफुल. यस, लवली साहब, बहुत बढ़िया कहा आपने. एंड आई थिंक इन कंक्लूजन से लर्न द स्किल्स to influence others rather than self-brag and self-promotion. Self-promotion does not influence anyone. It basically harms the person. So यहीं पे इसको समेटते हैं साहब. Very good discussion. I hope the listeners and the viewers will benefit from that and enjoy it. So that's all we have for today. All right, we'll see you next time with some different topic. Bye for now.